अभी तक हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. नाउ वी विल सी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, शॉर्ट फॉर्म इसका भी यूज होता है क्वेश्चंस में, दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो ये क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोज एंड कॉन्स, सारे हम देखेंगे. द रीजंस for going for MTP, everything we see. इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट लेवल पे. So it is medical termination of pregnancy, MTP. Okay. So, by any chance there is pregnancy which is unwanted. So, voluntarily, intentionally, the female can go for termination of the pregnancy before full term. ये इसका मतलब है. फुल टर्म का क्या मतलब है? पूरा gestation period. What is the complete gestation period? 9 months and 9 days. उससे पहले ही टर्मिनेट कर देना प्रेगनेंसी. वील ऑल्सो सी द रीजंस कि व्हाई दिस कैन बी लाइक अलाउड और दिस कैन बी डन. ओके, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स, वॉलेंटरी और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म. फुल टर्म से पहले ही ये प्रोसीजर करना इज MTP. ऑल ओवर द वर्ल्ड 45 to 50 मिलियंस MTP होते हैं पर ईयर, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल pregnancies per year. Okay, इंडिया में MTP लीगलाइज हुआ. स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया इट वाज लीगलाइज्ड इन 1971. ओके, नाउ जेस्टेशन पीरियड में होते 3 ट्राइमेस्टर्स, मतलब 3 मंथ्स का एक सेक्शन होता है. द फर्स्ट 3 मंथ्स आर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 4th मंथ से 6th मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड 7 से 9 तक थर्ड ट्राइमेस्टर. सो देयर इज एन सिनेरियो इन विच MTPs इज रिलेटिवली सेफ. तो वो हमें देखना है कब ये सेफ होगा, ये प्रोसीजर कब रिलेटिवली रिस्की होगा, एंड कब कंप्लीटली रिस्की एंड नॉट एट ऑल अलाउड. ये ऐसे हमें पता होना चाहिए. लाइक द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब द फर्स्ट 3 months of the pregnancy are what they are relatively safe time for MTP procedures. The first trimester, weeks point of view, first 12 weeks is relatively safe for MTP. Okay, इसमें लगता है consent of one authorized doctor और the one authorized official. एक authorized official जो होगा उनका consent on paper चाहिए. कॉजेस हम देख रहे हैं, what are the conditions जिसमें MTP अलाउ कर सकता है ये ऑथोराइज्ड डॉक्टर. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज रिलेटिवली सेफ. सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है दैट इज रिलेटिवली रिस्की. ये थोड़ा रिस्की होता है, इसके लिए और एक एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ेगा, दैट इज
amniocentesis. We very well know amniocentesis क्या है. amniotic fluid जो है वो एस्पिरेट करके स्टडी किया जाएगा कि whether there is a potential threat to the baby. उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस कुछ है, वो एम्नियोसेंटेसिस से पता चलता है. वंस द बेबी हैज पोटेंशियल थ्रेट ऑफ हैविंग एनी इलनेस इन फ्यूचर, या फिर द मदर हैज एनी पोटेंशियल थ्रेट, देन वी कैन गो फॉर व्हाट, वी कैन थिंक ऑफ, द डॉक्टर्स कैन थिंक ऑफ अलाउइंग एमटीपीज. थर्ड ट्राइमेस्टर का तो कोई स्कोप ही नहीं है. दैट इज द लास्ट ट्राइमेस्टर इन विच एमटीपीज आर नॉट एट ऑल अलाउड. If allowed, they are allowed in these two trimesters only. यहाँ लगेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर. कंसेंट ऑफ टू ऑथराइज्ड डॉक्टर्स. इसमें 2 ऑथराइज्ड डॉक्टर्स का कंसेंट लगेगा बिफोर गोइंग फॉर एमटीपी. यहाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 ऑथराइज्ड डॉक्टर का कंसेंट. कंसेंट इज व्हाट, द अप्रूवल ऑन पेपर मिलना. ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस फॉर विच द फीमेल विल बी अलाउड टू गो फॉर एमटीपी. ओके ओके, सो कंडीशंस देख लेते हैं इन विच एमटीपीज by these authorities will be allowed. ये कंडीशंस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. क्या होता है एमटीपी, उस पे क्वेश्चन है. ओके, एंड विच इज द सेफ टाइम फॉर एमटीपी प्रोसीजर एंड कंपैरेटिवली रिस्की, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, सो कंडीशंस फॉर एमटीपी. The first one be medical. उसमें आएगा मेडिकल में potential threat to the mother, like mother at high risk. Okay, means there are chances that the mother might suffer during the process of parturition. In that process mother का जो लाइफ है उस पे कोई रिस्क हो सकता है. ओके, लाइक ब्लड प्रेशर शूट होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें देयर इज पोटेंशियल थ्रेट टू द लाइफ ऑफ मदर. देन द डॉक्टर कैन अलाउ एमटीपी. ओके, नेक्स्ट इज यूजेनिक्स. ओके, इसमें क्या है, चांसेस, और चांसेस से इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि पोटेंशियल रिस्क है. ओके, पोटेंशियल रिस्क फॉर द बेबी टू सफर फ्रॉम mental or any physical illness. ओके, तो जैसे एम्नियोसेंटेसिस कराया है, सर्टेन सोनोग्राफीज आर डन, उस टाइम स्पैन में पता चला कि देयर इज पोटेंशियल रिस्क फॉर द बेबी टू हैव एनी मेंटल इलनेस, एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फ्यूचर, or any physical illness which is seen in the sonography. So they can go for, the female can go for MTPs. Okay, next is ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे. उसमें क्या याद रखना है, प्रेगनेंसी ड्यू टू सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसे सिनेरियोज में द फीमेल इज अलाउड टू गो फॉर एमटीपीज. ओके, नेक्स्ट इज सोशियो-इकोनॉमिक. इसमें क्या आएगा, द फीमेल इज ऑलरेडी हैविंग 2-3 kids, राइट, ऑलरेडी हैविंग 2-3 kids. तो इकोनॉमिकली शी इज नो
not in a condition to have the fourth baby, right? So इस situation में भी after giving proofs that so and so is the scenario of her family, they can go for MTP. Okay, and last is failure of contraceptives. If the contraceptives fail to work and there is unwanted pregnancy, then they can go for MTP. Okay, so India में legalize तो हो गया MTP 1971 में, but जो amendment act है वो आया 2017 में to keep a track on illegal abortions. Abortion is also a word for this, right? But this is legal. Legalized है ये procedure by giving whatever of the कि कोई भी category में अगर आ रहा है scenario, you have to give proper proofs and you can go for MTP. So जो amendment act था related to MTP that came in 2017 to keep a track on what? Illegal abortions. Okay, illegal abortions में mainly concerned क्या है? Female feticide, right? So female feticide count कम करने, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में इन कोरिलेशन विद द एमटीपी. फीमेल फिटिसाइड इज अ वेरी बिग इशू, राइट, जो अभी ग्रेजुअली कम हो रहा है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस. ओके, नाउ लेट्स सी द मेडिसिन्स associated with the surgical procedures in MTP. Okay, the drugs are it is misoprostol जो एक prostaglandin है and mifepristone जो एंटी प्रोजेस्टेरॉन है इन नेचर. अब ये इन नेचर का भी रोल प्ले है. लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या है? यर एसोसिएटेड विद दिस फंक्शनिंग एंड एमटीपी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्रेगनेंसी हो चुका है, राइट, इम्प्लांटेशन हो चुका है. सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कब होनी चाहिए आइडियली प्रेगनेंसी में? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बेबी बाहर निकलने वाला है. तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशियल स्टेज पे ही हो गए तो वो जो इम्प्लांटेड जाइगोट है देयर आर चांसेस इट विल कम डाउन, राइट. इसीलिए ये दिया जाता है मिसोप्रोस्टोल. मिफेप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरॉन है. प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम फॉर प्रॉपर प्रेगनेंसी. एंटी प्रोजेस्टेरॉन मेडिकेशंस हम देंगे तो उससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन पे एक्ट होगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम होंगे. प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम होना मींस व्हिच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट? The menstruation phase, the first phase, the bleeding phase basically. And the moment bleeding phase will start, anything associated with the endometrial wall is going to shed off. So anything में कौन concerned है? The zygote. इसीलिए first 3 week, the first trimester is safe because उसमें ज़्यादा growth and development zygote में नहीं हुआ रहता है. It's just a mass of cell in first 3 months you can say. So it's better and safe in the first trimester. Okay, and along with this, these two drugs, procedures like vacuum aspiration, surgical procedures, are followed. Okay, कि ये मेडिसिन देने के बाद either vacuum aspiration is what vacuum create करके to suck it out all the components जिसमें वो zygote भी बाहर आ जाएगा. सर्जिकल प्रोसीजर ज्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले सिनेरियो में होगा कि इम्प्लांटेशन के बाद वो ग्रोथ लेवल ज्यादा हो गया है 4th-5th मंथ में अगर प्लान किया तो सर्जिकल प्रोसेस ही करना पड़ेगा for the MTP. Okay, so that was all about medical termination of pregnancy.